हाय, क्या आपको पता है कि कैन और कुड इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कैन मतलब आपका एबिलिटी, मतलब अगर आप अपना एबिलिटी के बारे में बताना चाहते हैं किसी को, लाइक आई कैन प्ले फुटबॉल, आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन प्ले टेनिस, आई मीन दिस आर द सेंटेंस कैन शोज दैट यू हैव दैट एबिलिटी. बट एट द सेम टाइम कैन से आप अपना किसी को रिक्वेस्ट भी कर सकते हो. रिक्वेस्ट इन द सेंस लाइक कैन यू हेल्प मी, कैन यू गो देयर, कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. तो दीज आर द थिंग्स थ्रू विच यू कैन रिक्वेस्ट टू समवन. नाउ कुड मीन्स आप जो काम आप कर सकते थे, दैट मीन्स इट इज योर पास्ट एबिलिटी. इफ यू से दैट आई कुड प्ले फुटबॉल, दैट मीन्स आप फुटबॉल खेल सकते थे लेकिन आपने खेले नहीं. आई कुड कॉल यू, दैट मीन्स आप कॉल कर सकते थे, जो काम आपने किए नहीं. सो इट इज योर पास्ट एबिलिटी. एट द सेम टाइम you can request to someone with a very polite manner. Like if you say could you help me, that means you are very very polite to that person. If you go to a bank, you are asking a lakh rupees of loan to the bank manager, you can easily ask could you please provide me 1 lakh rupees of loan. So this is the basic difference between can and could. To know more, kindly do join and subscribe my channel. Thank you.